मिलकर एक कार्यक्रम सोचा, आयोजित किया। लीना मैम की अवेलेबिलिटी कुछ ही दिन थी दिल्ली में, तो हमने ये डेट ऐसे डिसाइड करी कि सारे लोग मिलकर आ पाए और आप सभी से हमें बात करने का मौका मिला। मैं आपके सामने यंग थिंकर्स फोरम की तरफ से एक विषय रखूँगा, जो विषय आप सभी उस पर सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। और ये जो कार्यक्रम है ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे युवा पीढ़ी एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर कैसे काम कर सकती है। जब हम छोटे थे तो हमें कहा जाता था, और अभी तक मुझे तो बात याद है कि युवा का जो उल्टा होता है वो वायु होता है। वायु में जो वेग होता है वही युवा में भी होती है। तो मैं युवा शक्ति जो हमारे हम थोड़े से बड़े या छोटे हैं, हमसे यहाँ पर विद्यार्थी हैं, उनसे उम्मीद करूँगा कि वो इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को और हिस्टोरिसिटी को समझें। मैं अपनी बात कुछ चंद मिनटों में इंग्लिश और हिंदी में रखूँगा। The concept of national calendar is far more than just a means of marking time. It is a profound cultural marker reflecting its civilizational astronomical knowledge, its philosophical worldview and its sense of historical continuity. I am going to lay some facts before you. I am a lawyer who practice in Delhi High Court and Supreme Court, so we are very much habitual of our facts and arguments. Today too, I have an argument before you. In 1957, India adopted Shak Samvat as the official calendar of India, that is Bharat. And I argue against it. What are my reasons? Let's hear it. While this was a significant step, the rich tapestry of Indian time reckoning systems, particularly Vikram Samvat, and foundational principles of Panchang, offered compelling alternatives. I would also not use the word alternatives, but the only alternative or the best possible option that the Indian civilization always used to practice, Vikram Samvat or Panchang as our time-making tool. Who is eligible to start a संवत? Now let's discuss this very interesting thing. कि संवत कौन शुरू कर सकता है? हम कहते हैं विक्रम संवत या शक संवत। शक थे कौन? उस पर भी बहुत सारे सवाल होते हैं और मुझे सवाल उठाने में कोई भी समस्या नहीं। Who is eligible to start a संवत? A king, a महाराजा who acts on धर्म, जो धर्म पर राज करे, जो अपनी प्रजा का सारा कर्ज उतारे और जो विजयी हो। विजयी होना तो महाराजा नहीं होते, जो विजयी हो वो भी एक बात है। दूसरा, धर्म पर राज करे और प्रजा का कर्ज उतारे, ऐसा। और इस बड़े स्केल पर, सबसे बड़े स्केल पर महाराजा विक्रमादित्य के अलावा भारत में कोई और हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं सामने आता है। भारत में कई राजा महाराजा हुए, पर हम महाराजा विक्रमादित्य की बात सबसे प्रमुख तौर पर करते हैं। Does Shakas qualify? You can ask yourself. Shakas were conquerors और उन्होंने सुशासन नहीं, कुशासन किया। अब नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान है जो अभी का हिस्सा है, वहाँ पर ओरिजिनली वहाँ से लोग थे। बिकॉज शक में और शाक्य में बहुत कन्फ्यूजन है, तो हम शाक्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम शक की बात कर रहे हैं, जो शक कैलेंडर भारत में अडॉप्ट किया था। इसमें सबसे दुख की बात यह है कि भारत में जब नेशनल कैलेंडर की कमेटी बनाई गई, तो भारत में नेशनल कैलेंडर कमेटी 1954 में बनाई गई और 1957 में भारत नेशनल कैलेंडर अपनी रिपोर्ट लेकर आया, जिसमें उसने विषय संवत को अपना नेशनल कैलेंडर उसको एक तरीके से सिलेक्ट किया। अब मेरा दुख जो है वो विक्रम संवत को लेकर है कि जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो विक्रम संवत पर सिर्फ एक पेज की बात हुई है और विक्रम संवत के लिए कहा गया है कि ये मिस्ट्री। आई ऑल्सो रेड लेटर्स ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू एंड ही सेज दैट पंचांग्स आर अनसाइंटिफिक। आई डू नॉट नो द फाउंडेशंस ऑफ वेयर ही कम फ्रॉम बिकॉज आई हैव नॉट रेड हिम बाइटली, बट आई हैव रेड द लेटर्स एंड द करेस्पॉन्डेंस टू द नेशनल कैलेंडर कमेटी एंड वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो रीजनेबल reason to maybe let's say include Shak or any other calendar. Vikram Samvat was not considered but excluded because it was mainly practiced by
practicing Hindus of India, and at that time it was more common to be in a more secular fashion. Vikram Samvat is our Hindu unisolar calendar system starting in 57 BC. Without any disputes, our Puranas and many of the scriptures with inscriptions and with gold coins of Vikramaditya prove all these. Even in Bhimbetka there are paintings to show the evidence of Vikram Samvat. Because when we talk about history or civilizational topics today, we always face the question of evidence or archaeology. Yesterday I got to speak to an archaeologist who worked on Vikram Samvat. He is from Ujjain, and I asked him that why is this happening? Our Chief Minister from Madhya Pradesh is celebrating Vikramaditya. In Ujjain we recently hosted a conference on Vikramaditya and Mahakal, who is obviously a lot of time. But this particular report of 1952 refuted that Vikramaditya did not exist. And there is a lot of confusion of Vikramaditya with Gupta dynasty. Gupta dynasty is completely different from Vikramaditya. I do not come from the background of history, but this is the basics that we know coming from Ujjain. Can all of you confirm if you have heard Vikram Betal stories? You know Vikram Betal, you know Singhasan Batti, which confirms, because history is not just a basis of archaeological evidence. History or itihas comes from our Shruti and Smriti as well. And our learnings should be based on our Shruti, Smriti, Parampara, Guru, Shishya, Parampara. By the way, Nepal has its official calendar as Vikram Samvat, but we still do not have any legislative backing or any policy paper or white paper or anything. This event, I was discussing with my team, and I thank the Center for Hindu Studies. This event is not just an event, it is an historic event in this timeline of establishing Vikram Samvat as our national calendar. And if it happens, and it should happen, thankfully in our lifetime, this event will also be credited, because we will be discussing a bit about Panchang and also a bit about Vikram Samvat in this. King Vikramaditya commemorated this era because he defeated Shakas. अभी दिल्ली में कई सारे लोग बात करते हैं, जैसे दिल्ली में बहुत सारे रोड है, बाबा रोड, हुमायूं रोड, XYZ रोड, तो लोग कहते हैं कि जो लोग जीतते हैं उनके नाम पर रोड बनते हैं। तो ठीक है, हम लोग जीते हैं, हमारे नाम पर संगत बना दीजिए, क्योंकि दैट इज साइंटिफिकली एज वेल एज रीजनेबली वेरी मच अ गुड आइडिया। Chaitra Pratipada marks the beginning of not only New Year but Avtaran Divas of this Brahman or Prithvi. इसके बारे में बहुत लोगों को कम पता है। According to Vishnu Puran, this day is celebrated as Prithvi's Avtaran Divas, following the period when this whole world was Jal Magna and Lord Vishnu took avatar to rescue and restore the earth. Now talking a bit about Britishers. During their rule, the Britishers did not promote the legacy of Vikramaditya, intentionally neglecting his contributions to Indian history. Mohit ji is now here, we are from Ujjain. We feel offended, and I would strongly use the word offended, when you say that you do not recognize who is Maharaja Vikramaditya. You would say that you do not know, let's say, Maharaja Shivaji. It will be too neglectful and offending. When I read the report, I was too angry, and I was also angry because one member was from Ujjain. I don't want to name him, but then there was a member. I think that he should have known at least about King Vikramaditya. Even after, because Pandit Nehru's personal astrologer was also from Ujjain, and I had so many questions, but I don't want to raise that. Even after independence in 1947. Many historians of India continue this trend. No prominent historian mentioned Vikramaditya, no prominent historian mentioned Panchang, no prominent historian mentioned Vikram Samvat. So we could never know. But by 2026, we understand now that there is a Shodh Sansthan, Vikramaditya Shodh Peeth Ujjain, even Sindhya Oriental Institute Ujjain, that they have produced archaeological evidences, they have argued in favor of Vikram Samvat. Our Chief Minister from Madhya Pradesh also speaks in favor. Prime Minister Narendra Modi has spoken
have political will. More than democratic will, we need political will to establish anything. We now have political will to establish Vikram Samvat as a national calendar. And I again repeat that Shaks should not be confused, and Shaks were outsiders at that time unless and until there is some other opinion on this, as far because I do not come from the background of history. So I will yes, Central Asia. Yeah, we had obviously very ancient relations with Central Asia, West Asia, but relations are different. You cannot put any